Okay, ji, Assalamu alaikum. We are starting off with the developed schedule which we did yesterday. Were working on it, but I just wanted to take you along those people who were not there yesterday, and incidentally they are not even today. Let me go a step back and quickly review the previous two processes, and let me quickly go back to activity duration and activity resource estimate. Okay, as we were discussing, once we have identified and sequenced the activities which you did the exercise earlier, we said in the last lecture, which was not recorded, we talked about activity resources and activity duration estimate. These two kinds of estimates, and I emphasize the fact that both of these things, both of these kinds of estimates can be done together. And I also said that sequencing is a separate activity and estimation is a separate activity. They are not dependent on each other. While you are sequencing your activities, you can also estimate for resources and duration. As far as the resources and duration are concerned, which is to be done first, this I said both of these have to be done together. But yes, you can start with resources, and you have the activities, and based on those activities you can start ascertaining what various kinds of resources you need for that activity. And naturally, if you can look around and see what resources are available, what can be made available, and things like that, so this activity resource estimation can be done up to some extent. But in the meanwhile, the duration estimate should also start, and both of these things put together would actually concrete the estimation. Estimation is actually three items are included: resource estimation, duration estimation, and cost estimation. Cost estimation, though, is a subject of cost management, but these three estimates work together. And any one of these estimates, if changed, may affect the other two estimates. Therefore, we understand that these three estimates will go together. Anyways, in this, I'll just focus on the tools. Here, the tools and techniques were naturally the expert judgment, alternatives analysis. Well, if I have got these kind of resources available to me, what are the various alternatives for these resources? Maybe I can employ two good carpenters and get the job done faster, or maybe I can have average level of people and it will take a little more time. So whatever alternatives are available to me, I will evaluate all of them, and whichever is best suited for my requirement, I'll choose that. I will also look at the published estimating data. What is the convention? How many people can do how much of job? So if there is any published data in our organization or otherwise from some standards body, that would be greatly benefiting us. Bottom-up estimation will be used in all kinds of estimates. Naturally, once we are estimating from down from the activity upwards, then it is called bottom-up estimation. There is no approximation here. We are trying to be as exact as possible, and therefore all the estimates of the activities, when summed together and they move up to the project level, they will give us the exact estimate for the whole project. But remember, estimate is estimate. Estimate cannot be very exact. Estimate is just our best possible guess how much it will take. So we will do the bottom-up estimation. This is the best kind of estimation possible. We can also use project management software for doing that, and the result we are going to get out of this process is activity resource requirements and resource breakdown structure. Activity resource requirements would be the assignment of various resources for each activity. This may not be final, because once we are going to put duration
beside it, then the resources may fluctuate accordingly. So they will adjust each other. So once I have some idea of the resource requirements, and I also have a resource breakdown structure, which is like an inventory, which shows how many resources were available to me, how many are to be used for various activities, and what is left in the store and in the pool, and so on and so forth. This would help me keep an inventory of all the resources, on which activity, what resources have gone and how many are left. So I would always be available. Like project management software, using it as a tool here, it also means that we can put our inventory or our resource pool into the project management software, and then we can keep assigning people from out of that resource pool, and project management software will automatically manage that. So this is a brief on the activity resource estimation. Let me directly move on to the estimate activity duration. And in activity duration, naturally, once we have a general idea of all the resources available to us, now we have to ascertain the time. Now, naturally, if the resources are increased, the time will decrease. How much time I want to lock on for each activity, this I will decide here. And naturally, I have all the data so far created from various activities of time management. Like I have the schedule management, I have the activity list and attribute, I have the resource requirements, I have the resource calendar, and so on and so forth. Resource breakdown structure and everything is available with me, and I am quite wise to estimate the duration properly. What are the various methods I can use? I can naturally use my expert judgment. I can also use three very interesting tools, like analogous estimating is something when I am creating an analogy with a previous event, or from our own experience, from our own organization, or from even outside of the organization, the analogy can work. If this kind of job can be done by another person in 3 days, I should also be able to do it in 3 days. This is an analogy. Or you can say analogy doesn't mean that it should be one-to-one relationship. It could be one-to-many relationship or many-to-one relationship. You can say because that person could do it in 3 days, I will be able to do it in 6 days. Maybe, looking at the capability or the volume of the work for each of these jobs, there's a difference, and you can analogously find that I can take double the time, or maybe I'm well equipped and I'm better equipped than that person. I can say I can take 1 day, I can do this job in 1 day. So I am actually taking the analogy from something else. This is not a very accurate way of doing it, but still, if you do not have any other means available, then analogy can be used. Parametric estimating is a little more accurate than an analogy, and that is, if I know how much work a person can do, I can divide the whole work by this figure and find out how many people I require. Or if I know the rate for doing 1 square foot of job, I can multiply it with the whole job and find how much money would be required. So all kinds of estimate, we can use this parametric kind of estimation. In this, we need to have a unit value identified, known to us. If that is known, it is easy to calculate the whole thing, but still it is an approximation. It is quite a wide approximation. It could not really be true. 3-point estimate is even better, and in 3-point estimate we are trying to not go for a single figure. If we think this job can be done in 3 days, what if it is delayed? What if it is done earlier? How much are the chances that this job will be delayed or this job could be done earlier? If I could somehow know that, I can have a better approximation. Rather, I can be a bit more exact by 3-point estimate. In 3-point, what I do is I take an opinion from a group of people, maybe many people, and I collect the data from them. The worst case and best case is considered as the optimist value and the pessimist value.
most of the people would be in the middle, and they would have almost the similar kind of opinion. I'm not saying the exactly same opinion, but similar kind of opinion. So therefore, the people in between, they carry more weightage. There are many people, there are more people who are, having the similar opinion. So that similar opinion would be called most likely. So what I do is I give some weightage to the optimist, some weightage to the pessimist, and most of the weightage to the most likely. And out of these three figures, what can I do? Firstly, if the data is very less, if there are only 4 or 5 people who are giving me these figures, then I would take simple average. That is called triangular distribution. But if there are many people who are giving us the opinion, then we can be sure that we have got a very smoothened out data. Therefore, we will not take the simple average. We will give the appropriate weightages to the most likely. We will give them 4 times the weightage, and one value, one weightage to the optimist and one weightage to the pessimist. And therefore, we can find the duration by weighted average method. This is 3-point estimate. And then we have the group decision making techniques. In group, naturally, many people sitting in the meeting, they can have different opinions. We can come to a consensus, and that consensus could be the best one. And lastly, reserve analysis. Whatever you calculate, whatever you estimate, you must keep appropriate reserves for every activity. I don't say that you keep a standard reserve. Don't take a standard reserve of say 10% for everything. No, that is not good at all. Some activities will require reserve, some will not require reserve. So which activities are more sensitive and they require reserve, and how much reserve they require, this must be carefully calculated. Some activities will require 5% reserve, some will require 10% reserve, some will require 100% reserve. So simply putting 10% for everything is not good. Therefore, reserve analysis should be done down to the activity level. Each and every activity should have its own reserve analysis. So by this, we get the activity duration estimates, and the project documents will be updated. I'll just show you how this 3-point estimate works. You can find all the text and the explanations in these slides, and you can learn from that. But I'm just quickly going through what we have studied yesterday. The slide in front of you is 3-point estimate. You see, the most likely value is the value of most of the people. Now, you could have taken the average of those people who are nearest to the center, and that is the most likely value. Optimist is the extreme positive value. Pessimist is the extreme negative value. So what you do is you take a weighted average, and the method of doing that is you look at the beta distribution at the bottom line. Beta distribution is 4 times the weightage to the most likely, 1 weightage to the optimist, 1 weightage to the pessimist. This comes out to be 6 weightages. Therefore, we divided by 6. So the answer would be my estimated time. But in case very few people have opted to respond to your query, maybe less than 10 people, then you may not use this beta distribution. You can use the triangular distribution, in which simple average of the 3 values will be enough. Okay, coming over to develop schedule. Now, once we have the duration estimate, the resource estimate, we already have the activity list, activity attributes, and we have the network diagram. So everything is now ready to develop a schedule. And to develop a schedule, there are many steps. This is a very intricate process. This is not a simple process, because it's not just a matter of creating the schedule. It is actually to put it all together. Whatever we have done so far, we have to put it all together. And as we did the exercise for sequencing, we did calculate some durations and critical path, etc. But remember, critical path is not to be calculated in activity sequencing. That is not the job of activity sequencing.
Activity sequencing is only that much work as we can establish the relationships and we can draw a diagram without durations. You see, you could only calculate the critical path and everything if I told you the durations. If you did not know the durations, you could have a diagram, a relationship diagram, a complete relationship diagram would be there, but there would be no durations. Now is the time that we have the durations. We have that network diagram, which is just a network diagram, no critical path, nothing in it. I will now put the durations onto it. And now I will calculate the thing you have calculated. Exactly, we will calculate that. We will do a forward pass. At the end of forward pass, we will know the duration of our project. Then we will do the backward pass. That will tell us the critical path. That will also tell us the float in non-critical activities. Float will only be in the non-critical activities. The critical activities will have zero float. So once I have done that, my critical path is ready. And I have the earliest start and earliest finish date, latest start and latest finish date for each and every activity. So I have two sets of dates for every activity, earliest dates and latest dates. So that means I can create two network diagrams out of it, two Gantt charts out of it. But so far, let us only concentrate on one earliest chart first. So to create the earliest chart, do you have that network diagram in front of you right now to create it? Not at the moment, sir. Yes, sir. Now, if I tell you how many days is your project? 14. 14 days. Okay, let's round it off towards upward side. Let's make it 15 days, right? So draw a straight line on a paper, a straight horizontal line on a paper. Divide that line into three portions. Write 0 on the left extreme. First portion where you mark the first 1/3 part, write 5 under it. Second portion, write 10 under it, and the third portion, write 15 under it. Now, where you wrote 0, draw a perpendicular line over it. Beside this perpendicular line, on the very top, you start writing your activity names, A, B, C, D, and write all of them. A, B, C, D. How many were there? A, B, C, D, E, F. 6. F, A, B, C, D, E, F. You write all these on the left hand side. So the perpendicular side shows all the activities and the horizontal side shows all the durations. 15 days is the maximum duration which can be shown in this chart, but we know that our project is less than 15, so it is okay with us. This size is okay with us, and all the activities are shown on the other side, right? Now consult your network diagram and see what were the earliest dates for activity A. What were they? 0. 0 was earliest start and earliest finish was? 4. 0 and 4, right? So it means that A will start from point 0 and will finish on point 4, right? Can you draw a bar starting at 0 in front of A, right in front of A? Draw a bar starting from 0 to and finishing at 4. Have you done that? Yes, sir. Right. So can you see that this
represents 4 days, from 0 to 1, from 1 to 2, from 2 to 3, and from 3 to 4. Right? Okay. What is activity B? Start and end. Early start and earlier finish. 06. 06. Can you draw that in front of B? Sir. Done it? Yes, sir. Yes, sir. Similarly, draw all the earliest dates against A, B, C, D, E, F. I don't have the activity graph with me, like a diagram with me because I'm out of station. So can you please share it or something? Okay. I also don't have, but I have to draw it for you then. Sir, C is 0 to 2. I can rate, and D is 4 to 5. No, sir. For 4 to 5. D. D delta is 4 to 5. E. And E was 9 to 12. I'm sorry. Can you And repeat F was sir? 12 to 14. 9 to 12 and F was 12 to 14. Sir, done. Okay. Right. Okay. Where is the screen? Okay, you have got, I'll give you a blank screen and you try to, anybody can try to draw it on board. Okay. Can you see the white screen? Yes, sir. Yes, sir. I'm having difficulty in getting it. Sir, now we can see the 12 schedule. White screen and, okay. We have the pen, right. So if that is one angle, that is the other side, this is 5, this is 10, this is 15, this is A, B, C, E, E, and F. So A was 0 to 4. 0 to 4, this is A. B was 0 to 6, B 0 to 6, C is 0 to 2. 0 to 2, D 4 to 9. 4 to 9, and E 9 to 12. 9 to 12, and F is 12 to 14. 14. You see,
What I can do is I can even write 0 to 4 here, 0 to 6 here to avoid confusion, 0 to 2, 4 to 9, 9 to 12, and 12 to 14. And if you see, this is my critical path. This 4 is here, 9 and 12. My project is finishing on 12th. 14. 14th, yes, sir. 14. Right? Now there are only two activities, B and C, which are not critical. Did we draw this thing before? Yes, sir. Once we have drawn it. Okay, Yes, sir. okay. So you see, there are only two activities, B and C, which are non-critical. All other activities are critical and they do not have float. So only B and C will have float. B and C. What are the latest dates for B and C? B. What is the B? B, sir. Sir, 3 and 9. 9. 2 is 3 and 9. Okay. Two to 9. And what is the latest for 2? C? C? Latest dates for C? Sir, 10 to 12. 10 to 12. This is 10 and this is 12. 2. There is something wrong. B should be 3. B is 3 to 9, sir. right, right. So you see, this is the float. This is the float. And B float is still here. It is the float. And if you calculate it from 0 to 9, this is the total span, the 9-day span. This is 9-day span. So activity B can be done in these 9 days, and the duration of activity B is 6 days. It can be done in any of. Similarly, the span for C is 12 days. You could do this 2-day activity in any 2 days out of these 12. But this flexibility is only with B and C, which are non-critical. The critical activity equal to their latest dates. Therefore, we cannot, if you move any one of those, the project will be delayed. So this is it. Now, the other thing is the resources. If I tell you, let's talk about only one kind of resource, say X resource. So if I need, I'm just assuming that only X resource is required, and there are 2 X's required for A, 4 X's required for B, 3 X's required for C, 6 for D, 2 for E, and 3 for F. Now, is it possible for me to find out how many people I require on in day 1? This is day 1. From here to here, this is day 1. Between 0 and 1 is day 1. This is day 1. This is 2. This is 3. This is day 2. This is day 3. This is day 4. And this is day 5. And our line here it shows that day 5, when I write 5 here, it means day 5 ends here, right?
So for the first 2 days, A, B, and C are required, right? So how many X's are required on day 1? Ji Janab. For first day, tell me for first day, how many people do you require? 9. Two. If all the 3, 9 numbers. I think 2, sir. 2, day 1. Yes. Yes, sir. Day 1, just look up from here upwards. Day 1, this much. Look at all the activities. F is not happening, E is not happening, D is not happening, C is happening, B is happening, A is happening. So B and some C of have the float. resources of ABC. Okay? B and C have float. A, B, and C. A, B, and C. But B and C can be delayed, sir. No, but we are not delaying. Who asked you to delay them? If there is a problem, then we'll delay them. For the time being, this is our earliest schedule. And if we want to work on our earliest schedule, then A, B, and C can happen together. Right? So if A, B, C are happening together, then how many resources? 9. 9 numbers. 9. Second day? Second day? Same. The same. The same Very number. nice. Third day? Third day, remember the C has finished. Same. C has finished. Now I have only A and B happening. 6 numbers. Fourth day? Fourth day, till this point. So again the same situation. Yes. 6 numbers. 6. Okay. What happens on the fifth day? Activity A finishes, B continues, and D starts. That means A is no more, only B and D matter. 10 numbers. 10. 10. So this situation is going to go on till 9th day. So we will require 10 people till, no, sorry, I am wrong. Till 6 day. 6 days we need 10. But from 7th day onwards, from 7th, 8th, 9th, and 10th. Okay, 7th day, the B has finished. The only activity ongoing is D, which requires 6 people. So 6 will continue till day 9. On the 10th day, D is no more and only E is there. So that is 2 people only, Yes. and that will go Sir, on on 9th for day, Sir, E is starting Yes. on 9th day. So the D finishes, E starts. It would be starting on 9 means that 9 days has passed. That means the 10th day. When we say 9 to 12, that means 10, 11, and 12. You understand this point? So this is 11th day, this is 12th, this is 13, this is 14, yes. So this finishes on 12. 13th and 14th day is only F, which is 3 and 3. Got it? This is your resource distribution. This is how you are going to be utilizing your resources over the project. But we talked about only one resource, only one kind of resource, right? X resource. It could be a carpenter, it could be a mason, it could be anything. But in your project, you don't have only one resource. You have got a number of resources. You might have to, draw something like this and calculate each and every resource, right? Now, let us see what happens to this only one resource. Okay. What is the maximum number of resources I require here? 10. 10, sir. Okay.
let me, okay, on the perpendicular side, forget about the Gantt chart and all the activities and everything. Let's say there is nothing up there. I say I need at most 10 resources. So let us say this is 5 and this is 10, right? This is 10 and this is 5, right? If I draw a vertical bar of 9 persons, it will go up to this point, right? For second day also, this will be something this. For third day, it will be 6 days, it will be like this. Fourth day, like this. And fifth day, it will be 10 people. Sixth day, again 10 people. Seventh day, we will again have 6, then 6, then again 6, then again 6. Then I have 2 people for 3 days, 2, 2, 2, and then 3. That this will happen like this. When we were estimating, when we were sequencing, when we were drawing the Gantt chart, we did not know how the resources are being utilized. This is the first time, once we drew these resources as a histogram, we find out that there is a wide disparity in the use of resources over the project life cycle. That means I will hire 9 people on day 0, I mean day 1, I will have 9 people available. They will work on the second day, and if I want to economize, I will fire 3 people and work with remaining 6 for next 2 days. Then I'll hire another 4 people to work for another 2 days. Then I'll again fire 4 people and I'll work for 4 days. Then I'll again fire further 4 people and work for 3 days. Hire 1 more person and work for 2 more days, and then the project will be complete. How practical is it, hiring and firing on daily basis? Not practical. Not practical at all. So if you have got ample money, you can say I hire 10 people, and whether they are working or not, I'll keep the 10 people till end. But you see, if, okay, let me draw a line on 10. This is the line. You see, 1 person is being wasted here. This is the waste time. This is the waste time. I am paying for this time, this waste time for nothing. So this is good. Should I hire 10 people? No, sir. It is not economical. This is not optimized. Yes, of course, if I am a poor planner and if I am not worried about how much people are being used, then I may go for this approach. But in this way, I am spending more than what is calculated. I calculated my project according to exact number of people, exact resources. But here I am almost spending double the amount. My cost will escalate. So this is not suitable. You agree with me? Yes, sir. Agreed, sir. Okay, what should we do now? We should somehow try to eradicate these peaks. Generally, my line, if I draw a journal line, let me change the color of the pen. You see, if I can take it, it could be, this is a stable line. I should somehow work on this line. You understand this? So any resources required more than 6. I'm drawing a line on 6. Any resource more than 6 should not be used. I will hire only 6 people and I'll try to work with them. And that way,
these two resources and these resources which are being used here, I have to somehow adjust it into this gap. You understand me? It is not exactly going to happen that I'll cut them and put them here, but what is going to happen is that I will, not employ more than 6 people here. Therefore, elongate. If I don't provide 10 people to these 3 activities, then what will happen? You see, I have got 3 activities which are actually responsible for making it 9. You understand that? A, B and C. Which is critical? Only A is critical. If I delay A, then my whole thing is going to go ahead. Right? So without delaying the project, I can move B and C here and there. How far can I take B? I can push the B from 6 to 9. So maximum I can push it till 9, no more. So if I can somehow push it there, I can reduce 4 people for first 3 days. For this period, till this period, I can reduce 4 people. And the new activity would be something like starting from no. I can only pull it 2 days, not 3 days. 2 days, yes. Till here. 6, 7, 8, 9. No, it is 3. Yes, 3 days. So I will then finish this activity on 9, and my resource requirement for the first 3 days would be reduced by 4, and that would be how much? New requirement would be 5. But what will happen on the 3rd day? 3rd day also it will be 5. No, not 5. It will be only the no, sorry. It will be 6, sir. No, 3rd day. First, second. This is day 3, na? This is day 3. So till 3 we will not be having this. Till day 2 C is there. 3rd day C is not there. C finishes there. C is not there. So only A, 2 people. 2 people will be required here. And then on the 4th day, A is there, B is there, and C is not there. That is nice. That came 4 and 2, 6. So this is 6. So just by moving one activity forward, I have resolved the problem for the first 4 days. 5, 5, 2, 6. Very good. Okay. What about these 10 days? Why are they 10? They are 10 because of D, and D is critical. I have no room for moving, further. So for the whole time, this will be 10, 10. So I have made these things crucial. This all is 10. The only way left to me is I have to affect the critical path, right? If I have to affect the critical path, then by this time, this is also finishing on 9, this is also finishing on 9. So both of these activities have to be stretched out. So how many people I have? I cannot employ more than 6 people, and I need 10 people. So how can I reduce them? Say I put 3 people here, and 4 people here, and extend these activities, both of these activities, they will stretch out for say another 4 days, right? I'm just making an approximation. So it will stretch out for another 4 days. So if I want to smoothen it out on 6, then 4-day delay will be caused, and remaining these activities could
be pushed further because they are on critical path. Only when the activity finishes, E and F can happen. So naturally they will be pushed forward. So the project will be delayed by 4 days, and we will not be using more than 6 people at any time. Confusion तो नहीं होगी कोई? No, sir, clear है. अच्छा, now I can do something else also. I can try to compress those activities जो कि the period from this to this. I can try to compress because we are using less people here. If I can somehow employ more people and bring it to the level of 5 or 6, then maybe I save 2 days from here. That will further, reduce the duration by 2 days. So my 14 days project may now be done in 16 days. You see how I have optimally tried to utilize all the gaps. I have filled all the gaps and I have cut all extra resources. This is called resource smoothing. Although we have tried to do it intelligently and we have tried to look at each and every activity and see what can be adjusted where, but this can be done automatically also. If you are using a project management software, 6 resources, it will automatically do all the calculations and adjust it and tell you that your critical path has now changed. The project duration is, new duration is this much, right? So this is something which usually we do not do by ourselves, but I just wanted to tell you and show you how this can be done. So this is a mechanism of dealing with the resources. Resources are dealt in 2 ways. One is called resource leveling and the other is called resource smoothing. I don't know whether it is in this chapter or somewhere else. Okay, let me go back to okay, should I delete everything here? Yes, sir. Erase all drawings, right? And now we can okay. These are the resource optimization techniques, and let me take you directly to resource optimization. These things do not need any explanation. Okay, this critical path method is the method in develop schedule. Critical path, which we studied earlier, is not part of activity sequencing. It is part of develop schedule. And you can use another method, critical chain. I'll get back to that, but let me first discuss this one. You see, here is what is resource leveling. Listen to this very carefully. Resource leveling and resource sharing, these are 2 techniques for resource optimization, right? Okay. Resource leveling is a technique in which start and finish dates are adjusted based on resource constraint. Now, this is to be very carefully. People confuse resource leveling with the other term. Resource leveling is if Mr. X is required on activity A and he is also required on activity B, while A and B are to be done simultaneously, can it be done? No. एक ही बंदा 2 कामों पे जो कि साइमल्टेनियस एक्टिविटीज हैं उन पे नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि या तो हम किसी और को काम दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते और उसी ने ही करना है तो फिर ये एक तरह की डिपेंडेंसी आ गई है। दिस इज नॉट एक्टिविटीज की आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, लेकिन ड्यू टू रिसोर्स एक कंस्ट्रेंट क्रिएट हो गया।
ये देखें यहां पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द रिसोर्स कंस्ट्रेंट विद द गोल ऑफ बैलेंसिंग डिमांड फॉर रिसोर्सेज विद द अवेलेबल सप्लाई। मेरे पास सप्लाई में तो वो एक ही बंदा है और उसी बंदे को मैंने ए में भी लगाना है, बी में भी लगाना है, तो इसका मतलब है कि जब वो एक एक्टिविटी से फारिग होगा तभी दूसरी पे लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब है ए और बी के दरमियान अब रिश्ता एस्टेब्लिश हो गया कि बी ए के बाद ही शुरू हो सकती है। ये रिश्ता पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। जब मैं इस तरह के रिश्ते एस्टेब्लिश करता हूं रिसोर्स कंस्ट्रेंट की वजह से, तो जो नया चार्ट बनता है, जो नई शक्ल बनती है, उसको हम कहते हैं ये रिसोर्स लेवल्ड है। यहां मैंने रिसोर्स लेवल कर दी है, मतलब अब किसी रिसोर्स में कोई कंस्ट्रेंट नहीं बचा। जी आबिद, आप अकेले बच गए। जी सर। तो ये रिसोर्स ठीक है। कंस्ट्रेंट अब नहीं बचा, राइट। जी जी। रिसोर्स ये हो रही है, देखिए अगर आप रिसोर्स लेवलिंग होते हुए, ये ए और बी है, दो साइमल्टेनियस होनी थी। इसे ए की, जी ये सू is required to work here also and here also, but she cannot be duplicated. Therefore, just due to her, A एक्टिविटी और B एक्टिविटी के दरमियान एक और रिलेशनशिप बन गया कि जब तक A खत्म नहीं होती B नहीं स्टार्ट हो सकती। यस सर। ठीक है ना? तो जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये रिसोर्स यहां लेवल करना पड़ गया। फिर जी सर। दूसरी चीज है रिसोर्स स्मूथिंग। रिसोर्स स्मूथिंग क्या है? ये स्मूथिंग वो चीज है जो अभी हमने की है, जो हमने अभी किया ना, ये जो ड्राइंग बना के सारा कुछ किया और हमने वो जी सर। बार्स को लेवल किया, हिस्टोग्राम को लेवल किया, इसको हम कहते हैं स्मूथिंग। द टेक्निक दैट एडजस्ट द एक्टिविटीज ऑफ अ स्केड्यूल मॉडल सच दैट द रिक्वायरमेंट्स फॉर रिसोर्सेज इन द प्रोजेक्ट डू नॉट एक्सीड सर्टेन प्री डिफाइंड रिसोर्स लिमिट्स। हमने कहा 5 बंदों से ऊपर नहीं देने या 6 बंदों से ऊपर नहीं देने, ये प्री डिफाइंड था। इसके हिसाब से पूरे स्केड्यूल को एडजस्ट करना जो है, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स स्मूथिंग। ठीक है सर। जी गाजी, क्या हाल है? गाजी आवाज? अच्छा जी, लेट मी गो बैक टू जो क्रिटिकल चेन की मैंने बात की थी। ये मैंने कल भी लास्ट टाइम भी आपसे जिक्र किया था, व्हाट इज क्रिटिकल चेन। क्रिटिकल चेन बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक भी रिसोर्स कंस्ट्रेंट से है और इसका ताल्लुक एक और चीज से भी है, और वो है कि जो इनहेरेंट हमारे प्रोजेक्ट्स में डिले की कॉज है उसको एलिमिनेट करना। इसके पीछे एक थ्योरी है जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसे एक बात कही जाती है कि a chain is as strong as its weakest link। एक चेन जो है वो अपने वीकेस्ट लिंक जितनी मजबूत है उससे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। वजह, भले चेन के सारे लिंक कितने ही मजबूत क्यों ना हो, जो वीकेस्ट लिंक है, एक धागे का लिंक बनाया हुआ है आपने, जब उसमें दबाव पड़ेगा, उस चेन से आप किसी चीज को उठाने की कोशिश करेंगे तो टूटेगी तो वहीं से ना, जहां से वीकेस्ट होगी। सो चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। देयरफॉर प्रोडक्शन में ये कहा जाता है कि आप जब मसला कोई आता है तो हम उसके कंस्ट्रेंट को, सही कंस्ट्रेंट को, सबसे बड़े कंस्ट्रेंट को आइडेंटिफाई नहीं करते और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। आपका सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा, बजाय इसके कि हम उसको डिग डाउन करें, उसकी कॉज को ढूंढें, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी लोग बड़े बुरे हैं, इनको ट्रेनिंग करवाएं, इनको जूते लगाएं, इनको ये करें वो करें, महंगी मशीनें लेके आए, इक्विपमेंट चेंज कर दें। तो हम स्टूपिड किस्म के डिसीजन लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, जिससे उस प्रॉब्लम की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पलती रहती है, पलती रहती है। जो आपकी होती है कन्वेयर बेल्ट प्रोसेस, पूरा जो होता है प्रोडक्शन का, उसके दरमियान में एक मशीन लगी हुई है, उसकी कैपेसिटी प्रोडक्शन की कम है। उससे पहले जो मशीन लगी है वो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, और ये जो मशीन कम कैपेसिटी वाली है, इसके बाद वाली मशीन की भी कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, ये बिल्कुल चेन वाला सिलसिला बन गया। फर्ज करें कि
आगे पीछे की सारी जितनी मशीनें हैं उनकी कैपेसिटी है कि वो 100 आइटम्स पर आवर प्रोड्यूस कर सकती हैं, ये सिर्फ 50 कर सकती है। तो आपकी प्रोडक्शन क्या होगी टोटल? देखने वाला यही कहेगा जी 100 है, सारी चीजें 100 हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये तो बॉटलनेक क्या बना हुआ है, तो जहां बॉटलनेक बना हुआ है उससे ज्यादा तो नहीं निकल सकती। अगर पिछली मशीन ने 100 आइटम प्रोड्यूस कर भी दिए हैं, उनमें से आगे तो 50 ही जाने, अगली मशीन तो 50 ही हजम कर सकती है, बाकी 50 तो पीछे पड़े रहेंगे। अगला 1 घंटा गुजरेगा तो वो 100 और बना के डाल देगा, उसमें से ये फिर 50 इस्तेमाल करेगा, पीछे बैकलॉग इकट्ठा होता जा रहेगा 50-50 का हर घंटे, और वहां पे अंबार के अंबार लगते चले जाएंगे। और आगे क्या होगा? ये मशीन जो जो कमजोर है, ये 50 यूनिट निकाल रही है, अगली मशीन 100 यूनिट ले सकती है। इसका मतलब ये है कि वो 50 यूनिट में तो काम नहीं कर सकती। ये 2 घंटे में जब वो 100 यूनिट पूरे करके देगी, तब वो 1 घंटे के लिए चलेगी। इसका मतलब है कि अगली मशीन हाफ कैपेसिटी में चलेगी। हमारा बॉटलनेक ना पिछली मशीन है ना अगली मशीन है, हमारा बॉटलनेक ये वाली मशीन है जो 50 करती है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा के 100 कर दूं, सारा मसला हल हो जाएगा। इसका मतलब है कि मसला जहां पर है, कंस्ट्रेंट जहां पर है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, और अगर हम उसे एड्रेस कर लेते हैं तो हमारा लगती है। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो स्केड्यूलिंग में इसका बड़ा इस्तेमाल है। स्केड्यूलिंग में आप देखते हैं कि आप, ये तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम आप लोगों ने बनाया ना, जो नेटवर्क डायग्राम बनाया, ये बड़े कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी होते हैं, बहुत से पार्ट, बहुत सी एक्टिविटीज, उनमें से आप किस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं? अभी हमने एक्सरसाइज की, अभी हमने देखा कि जनाब हम क्यों, क्योंकि क्रिटिकल पाथ में फ्लोट कोई नहीं था, और क्रिटिकल पाथ अगर एक दिन भी डिले होता तो प्रोजेक्ट डिले हो जाता। इसका मतलब है कि मेरे लिए जो कंस्ट्रेंट है वो ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कि क्रिटिकल पाथ से लेट नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं से लेट हो जाए वहां फ्लोट है, यहां फ्लोट नहीं है। इस क्रिटिकल पाथ को कैसे बचाया जाए, ये मसला है हमारा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मुसीबत पड़ी हुई है, कि इसे क्यों बचाया जाए। उसकी वजह यह है कि हर चीज लेट हो जाती है, जो काम करते हैं वो उसमें डिले कॉज हो जाता है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। थ्योरी ये कहती है कि एक काम को जितना भी वक्त दिया जाए, नो मैटर ज्यादा वक्त दे दें कम वक्त दे दें, जितना मर्जी वक्त दे दें किसी काम को, वो काम उस वक्त, उस अवेलेबल टाइम के अंदर फैल जाता है। अगर 2 दिन का काम था और मैंने 10 दिन दे दिए, तो वो 10 दिन का ही काम बन जाएगा। जिस बंदे को मैंने ये काम दिया है वो उसको रिलैक्स कर जाएगा और उसको, उस काम को स्प्रेड कर देगा 10 दिन के अंदर। अब अगर मैं उसे कहूं कि भाई ये काम तो 2 दिन का था, तो तुम मुझे चलो 4 दिन में कर दो, वो कहेगा सर अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब मैंने जो पेस रखा हुआ है वो 10 दिन वाला रखा हुआ है, तो 4 दिन बाद तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो इसको कहते हैं पार्किंसन लॉ, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। जितना टाइम भी किसी काम को दे दिया जाए वो उतने का ही बन जाता है, और उससे कम में नहीं हो सकता। अच्छा चले मैं मान लेता हूं कि हो सकता है, 2 दिन का काम था, आपको 10 दिन दिए, आप बड़े जबरदस्त आपने काम किया, आपने 4 दिन में वो काम कर दिया। अगर आपने वो काम 4 दिन में कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे जी? वट विल यू डू विद योर रिमेनिंग 6 days? जी जनाब, आपके पास जो बाकी 6 दिन बचे हैं उनके साथ आप क्या सलूक करेंगे? रिजवान साहब, किसी और काम में लगा दें। लेकिन आप तो उस काम के जिम्मेदार है ना, वो जो 10 दिन वाला था, आप किसी और काम में कैसे लगा सकते हैं? अगर कोई सेंट्रल पूल है वहां दे दें ये किसी को। वहां दे दें। कभी आपने देखा या सुना है किसी ने दिया हो टाइम अपना बचा हुआ किसी को? आबिद सही कह रहे थे कि जो बंदा काम कर रहा होता है उसकी टेंडेंसी यही होती है, या उसकी मोटिवेशन यही होती है कि मैं जरा जल्दी जल्दी काम कर लूं फिर रेस्ट करूंगा।
So whatever time is saved, he enjoys for himself and his team. He doesn't give that advantage to the project manager. Whereas आप सही कह रहे हैं रिजवान साहब कि वो वापस करना चाहिए टाइम, जो टाइम बचा है वो वापस जाना चाहिए हुकूमत के खजाने में, ताकि वो प्रोजेक्ट की सेहत के लिए, प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए उस टाइम को इस्तेमाल किया जा सकता है तो किया जाए। प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोग्रेटिव होना चाहिए। लेकिन जिस बंदे को वो 10 दिन दे दिए गए हैं, वो कहता है मैं तो नहीं बताता किसी को, मैं बताऊंगा ही नहीं किसी को कि ये टाइम बच गया और मैं आराम करूंगा। तो जो टाइम बचा वो तो आपने खुद खा लिया, इसका मतलब है प्रोजेक्ट को कोई फायदा ना दिया। लेकिन अगर वो काम 10 दिन में ना हो सका तो क्या करेंगे जी? अगर ये काम 10 दिन में ना हुआ तो क्या करेंगे जी? प्रोजेक्ट टाइम को चार्ज करेंगे सर। प्रोजेक्ट मैनेजर को के पास जाएंगे, उसकी मिन्नतें करेंगे, सर मारे गए, ये हो गया। तो अगर को डिले हो जाए तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर, अगर जल्दी हो जाए तो वो मेरी मर्जी। तो हम क्या कर रहे हैं, जो काम अगर हो भी जाएगा तो मुझे फायदा नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर ना हुआ इसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो नहीं हो पाएगा और हर एक्टिविटी मुझसे रोती हुई आएगी और मुझसे मांगेगी थोड़ा टाइम और दे दो, 1 दिन और दे दो, 2 दिन और दे दो। तो अगर ये क्रिटिकल पाथ हुआ तो इसका तो बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा। एक और थ्योरी है, वो है जी स्टूडेंट सिंड्रोम। वो ये कहता है कि आपको जितना भी टाइम दे दिया जाए, आपने काम तो आखिरी रात ही करना है। ठीक है ना? स्टूडेंट को आप 3 महीने की छुट्टियां दे देंगे, एग्जाम की तैयारी करो, वो फिल्में देखेगा, शॉपिंग करेगा, डिस्को डांस करेगा, आखिरी रात को जाके कहेगा अब पढ़ना है जी, सुबह इम्तिहान है। एग्जैक्टली प्रोजेक्ट्स में भी यही होता है। आपको जो 10 दिन मिले हैं, जनरली टेंडेंसी ये होती है कि शुरू में हम बिल्कुल ठंड रख के बैठे होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ना शुरू करते हैं और आखिर में आके हम अपनी पीक पे जाते हैं। और वो जो 2 दिन का काम है वो आखिरी 1 दिन में शुरू होता है और 1 दिन में 2 दिन का काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो नहीं हो सकता ना, डिले हो जाएगा। डिले होगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पहुंच जाएंगे। अब प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ऐसा क्या हथियार है कि वो इस मुसीबत से अपने आप को बचा सके? इसके लिए हम क्रिटिकल चेन मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्रिटिकल चेन मेथड क्या करता है, यह समझ लें कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर ये असर्टन करता है कि जो एस्टिमेट हमने लगाए हैं इसमें लोगों ने कितना झूठ बोला। जो गलत एस्टिमेट बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उसको कहते हैं पैडिंग करना। पैडिंग इज क्रिमिनल फॉर द हेल्थ ऑफ द प्रोजेक्ट। वैसे तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन करते सभी हैं, और करते सभी हैं तो फायदा किसी को भी नहीं होता। मतलब वो अगर फायदा होना होता है इंडिविजुअल को होता है, उस टीम को होता है जो वो काम कर रही थी, बाकियों को या प्रोजेक्ट की सेहत को कोई फायदा नहीं होता, जैसा मैंने अभी आपको प्रूव किया। इसका मतलब है कि पैडिंग करने वाला जो है वो अपना जाती फायदा ले रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर को उसका कोई फायदा नहीं है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को जनरली पता चल जाए कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ पैडिंग, उसको मद्देनजर रख के वो उतना टैक्स लागू कर सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पे वैसे तो पैडिंग बड़ी बड़ी ज्यादा होती है। मेरा मतलब जो मैंने कहा ना 2 दिन का काम तो 10 दिन मांग लेते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, यकीन करें ऐसे ही होता है। ये कोई पैडिंग ऐसे नहीं होती कि 10 दिन में 1 दिन एक्स्ट्रा ले लिया आपने, उसका तो हमें कोई खास तकलीफ नहीं है। हमें तकलीफ है कि 2 दिन के काम पे 10 दिन मांग रहे हो, तो मतलब 100, 200, 300% एक्स्ट्रा टाइम मांग लेते हैं और फिर भी आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते। आप जरा जाके अपने प्रोजेक्ट्स को एक दफा रिव्यू करें, क्या वाकई जो टाइम मांगा गया है वो जस्टिफाइड है। आप एक एक काम के अंदर घुसेंगे, आप कहेंगे यार ये क्या बकवास है, ये तुमने इतना टाइम किस बात का मांगा है। पता चलता है वो सब उसने पैडिंग की होती है। एनीवेज, जब आप अपने कामों में जाएंगे और देखेंगे अपने प्रोजेक्ट में, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि ये सिलसिला क्या चल रहा है। मगर चले मैं मान लेता हूं कि बहुत ज्यादा पैडिंग नहीं है, सिर्फ 50% पैडिंग की हुई है।
ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी मैच्योर है। अगर ज्यादा मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन होगी और वहां अच्छे कंट्रोल होंगे, वहां पैडिंग का लेवल कम भी हो सकता है। तो जिस तरह की एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप ये चेक कीजिए कि कितनी पैडिंग होने का इम्कान है, और उस पैडिंग के ऊपर आप अपना हक जिता सकते हैं। पूरे पूरे का पूरा जिताना चाहते हैं या उससे कम। फर्ज कर लेते हैं मैं जरा कंसिडरेट हूं और मैं ये कहता हूं कि नहीं, मैं 50% जो पैडिंग हुई है उसमें से 25% मैं जब्त कर लेता हूं। अच्छा, 50% का क्या मतलब है? 50% का मतलब है कि जिस बंदे ने 6 दिन मांगे हैं, 6 दिन का काम उसने 9 दिन का है, ये मतलब है ना जी। यस सर। 6 दिन का काम उसने 9 दिन का है, मैं उसके 1.5 दिन वापस ले लेता हूं, आधा टाइम ले लेता हूं वापस। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हर एक्टिविटी से मैं उसका आधा पैड वापस ले लेता हूं। आर यू विद मी जी? राजी साहब, रिजवान साहब, जनाब? जी सर। यस सर। तो अभी यूं समझ लीजिए कि मैंने एक टैक्स लगा दिया, लेकिन याद रहे कि ये मैं बात कर रहा हूं क्रिटिकल पाथ को बचाने की। इसलिए आई एम नॉट कंसर्न अबाउट द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई जस्ट वांट टू create a buffer only for the critical path, and that buffer would include time extracted out of the critical activities. So फर्ज करें 2 दिन मैंने एक एक एक्टिविटी से लिए, दो एक से लिए, तीन एक से लिए, एक एक से लिया, तो मेरे पास ये कोई 7-8 दिन इकट्ठे हो गए। ये जो 7-8 दिन मेरे पास हैं, इनको मैं क्या करूंगा? प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम नहीं करूंगा, प्रोजेक्ट के एंड पे जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी है ए बी सी डी, उसके बाद एंड एंड को जो लाइन जाती है उससे पेशतर मैं एक डब्बा बना के उसके अंदर लिख दूंगा प्रोजेक्ट बफर, और ये सारा टाइम मैं उसके अंदर रख दूंगा। लेकिन काम करने के लिए जो टाइम क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज के पास बचा है वो वही है जो मैंने उनका जब्त करने के बाद छोड़ा है। इसका मतलब है कि अब वो पीटर्स वो क्या कहते हैं, लॉ के तहत, वो कौन सा मैंने बोला था, पार्किंसन लॉ। पार्किंसन। पार्किंसन लॉ के मुताबिक अब वो अगर उसको 6 दिन मिले हैं तो वो 6 दिन में ही करने का मजबूर है, या 7.5 दिन में करने को मजबूर है। तो वो जनाब वो उतने टाइम में करने की कोशिश करेगा, उसे पता है मुझे टाइम नहीं मिलना, ये मुझसे टाइम वापस ले लिया गया है, तो वो उसके अंदर कोशिश करेगा उसे कंप्लीट करने की। लेकिन अगर उससे ना हो सका तो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आना है ना उसने रोता हुआ। जब वो प्रोजेक्ट मैनेजर से कहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छी चाक पलट करके उसको हो सकता है रिफ्यूज कर दे, या हो सकता है उसको कि अच्छा ये लो आधा दिन ले लो, कंप्लीट करो इसके अंदर। मेरा मतलब है अब वो जो टाइम उसके बफर में पड़ा है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की सवाबदीद है। वो चाहे तो जितना टाइम उससे जब्त किया था उसको पूरा वापस कर दे, या थोड़ा थोड़ा करके दे, या ना दे। इस तरह क्या होगा कि इस बात की एश्योरेंस हो जाएगी कि क्रिटिकल पाथ डिले नहीं होगा, बल्कि इसका भी इम्कान पैदा होता है कि शायद क्रिटिकल पाथ से भी कुछ पहले हम काम खत्म कर लें। एंड दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। उसके बावजूद हमने इसको पॉसिबल बना दिया जस्ट क्रिटिकल पाथ की वजह से। आप यकीन करें ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट अभी 94 में मार्केट में आई है, और इसके कोई मतलब अभी 20-22-25 साल भी नहीं हुए। दिस इज जस्ट न्यू, और इसने दिमाग पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था जब इन्होंने प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट और ये चेन वाला तरीका इस्तेमाल किया। तो हैरान रह गए लोग कि जनाब जो हम सोचते थे हो ही नहीं सकता वो हो गया। इसी तरह ये प्रोजेक्ट लेट होते ही होते थे, इस तरीके के तहत प्रोजेक्ट को जल्दी करने का इम्कान पैदा हो गया, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ये जो चीज हमने बफर रखा है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट बफर। लेकिन ये तो हमने सिर्फ प्रोजेक्ट की क्रिटिकल एक्टिविटीज में से टाइम लिया, इसका मतलब है इन पे हक किसका है वापसी का? अगर ये टाइम वापस किया जाए तो याद रहे सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटीज ही को
ये टाइम की वापसी की जा सकती है। जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है, अगर वो किसी वजह से डिले होती है, अपना फ्लोट खत्म कर देती है, फिर भी डिले होती है, और वो कहती है कि जी मैं तो बड़ी मजबूर हूं, मुझे भी अपने उसमें से प्रोजेक्ट बफर से कुछ दे दो ना, तो उस पे फॉरबिडन है। ये बफर प्रोजेक्ट के क्रिटिकल पाथ का है, इसका नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज को कोई हक नहीं पहुंचता क्लेम करने का। वो क्या करें फिर? अगर वो लेट हो जाए तो वो क्या करें? पहली बात तो ये कि अपने फ्लोट में गुजारा करें, और अगर उससे भी लेट होते हैं तो भाई अपनी प्रोटेक्शन खुद बिल्ड करें। आपको पता है ना कि टोटल फ्लोट एक पाथ का होता है, नॉन क्रिटिकल पाथ का अपना फ्लोट होता है, 2 दिन 4 दिन जो भी होता है, वो उस फ्लोट के साथ अपना बफर रख ले, अपनी उन एक्टिविटीज से कुछ टैक्स लगाए, अपना बफर रख ले। सो हर फीडिंग बफर जो पाथ है, हर वो पाथ जो क्रिटिकल पाथ को के अंदर दाखिल हो रहा है, नॉन क्रिटिकल पाथ जो क्रिटिकल पाथ में दाखिल हो रहा है, वो जिस पॉइंट पे क्रिटिकल पाथ में दाखिल होता है, उस पॉइंट से पहले उसके ऊपर फीडिंग बफर लगाया जा सकता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट फीडिंग पाथ। और ये चीज अगर किसी हद तक आपको समझ आ गई है तो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताता हूं। इसमें आप क्या देख रहे हैं, नजर आ रहा है जी क्रिटिकल चेन मेथड का डायग्राम? जी जनाब, डायग्राम नजर आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है ओके, सर। क्या आप ये देख सकते हैं, ये दरमियान वाला क्रिटिकल पाथ है सी डी ई एफ, और सी डी ई एफ से जो टाइम जब्त किया गया है वो हमने प्रोजेक्ट बफर में रख दिया है, और ये सिर्फ प्रोजेक्ट बफर के लिए है। अगर सी एक्टिविटी मांगे या डी मांगे या ई मांगे या एफ मांगे तो इस बफर में से उसको वही टाइम दिया जा सकता है, और इस बफर से ज्यादा हमारे पास गुंजाइश नहीं है। और अगर मैं अच्छा कंट्रोलर हूं, अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, तो मैं इस बफर में से भी टाइम बचा लूंगा, और अगर बचा लिया तो प्रोजेक्ट जल्दी भी हो सकता है। ये है वो कमाल जो प्रोजेक्ट जल्दी करने का हो सकता है। ओके, अब ये जो एक्टिविटी ए और बी वाला पाथ है, ये पाथ का अपना फ्लोट होगा, लेकिन इन एडिशन टू दैट फ्लोट, अगर वो फ्लोट खा जाता है, फर्स्ट 2 दिन का फ्लोट था, वो फ्लोट ए बी ने खा लिया, वो क्रिटिकल हो गए ना। फिर जब वो क्रिटिकल हो गए, अब वो उससे ऊपर एक दिन भी लेट हो तो नुकसान तो हमारा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कहा हम तुम्हें तो कुछ नहीं देंगे, तुम अपना फीडिंग बफर खुद स्टैब्लिश करो। तो वो अपना फीडिंग बफर बनाएगा ए और बी से टैक्स लगाकर। इसी तरह ये तीसरा पाथ जो है जी वाला, ये अपना बफर अपना बनाएगा। सो जहां जहां ये पाथ दूसरे जो नॉन क्रिटिकल हैं, ये क्रिटिकल पाथ के अंदर जहां से दाखिल होते हैं, उससे पेशतर उनके अंदर फीडिंग बफर रख दिया जाता है। इससे वो पाथ भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो ये यहां पे ये कहानी तो हो गई कि प्रोजेक्ट बफर और फीडिंग बफर क्या करते हैं। एक तीसरा भी बफर होता है, और वो होता है रिसोर्स बफर। अभी आप लोग सारे डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो हमने बात की थी एक रिसोर्स लेवलिंग और रिसोर्स स्मूथिंग की। रिसोर्स लेवलिंग में मैंने ये बात की थी कि अगर कोई रिसोर्स ऐसा है जिसका कंफ्लिक्ट है, मतलब मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट एक्टिविटी ए एंड ही इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी सी। इस डायग्राम में देखें, अगर ए और सी पे एक ही बंदा चाहिए और ए और सी ने वैसे पैरेलल होना था, तो क्या करेंगे? इसका मतलब है बंदा तो आधा आधा तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो एक ही जगह काम करेगा। अगर वो ए पे काम कर रहा है तो ए पे खत्म करके सी के पास आएगा। इसका मतलब है कि ए और सी के दरमियान एक रिसोर्स डिपेंडेंसी बन जाएगी कि सी ए के बाद ही शुरू हो सकती है। ये तो था रिसोर्स कंस्ट्रेंट निकालना। अगर मैंने ये वाली एडजस्टमेंट कर रखी है, तो यहां पे हम कुछ और बात करने लगे हैं। क्रिटिकल चेन में हम एक रिसोर्स बफर रखते हैं। मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूं कि रिसोर्स कंफ्लिक्ट नहीं एग्जिस्ट करता यहां पर, क्योंकि वो हम पहले रिजॉल्व कर चुके हैं रिसोर्स लेवलिंग के थ्रू। कोई रिसोर्स कंस्ट्रेंट इस वक्त यहां एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एक एक्टिविटी है जिसने ए से फारिग होना है एक बंदे ने, और ई पे जाना है, और ए और ई के दरमियान 10 दिन का गैप है।
ए जिस दिन खत्म हो रही है और ई जिस दिन शुरू हो रही है, उसके दरमियान 10 दिन का गैप है। इसका मतलब है कि ये बंदा ए और ई के दरमियान फारिग है। फर्ज करें वो 10 दिन छुट्टी चला जाता है और छुट्टी से वो लेट हो जाता है। अगर वो लेट हो गया तो मेरी एक्टिविटी ई तो सफर कर जाएगी, जबकि कोई रिसोर्स का कंफ्लिक्ट भी नहीं था, इतना बड़ा गैप भी था, उसके बावजूद मेरी एक्टिविटी सफर कर जाए, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। फारिग होना है और 10 दिन उसके पास है, मैं उसके 10 दिन के ऊपर टैक्स लगा दूंगा। फर्ज करें मैं उसे कहता हूं मुझे तुम 2 दिन पहले यहां चाहिए, ई एक्टिविटी शुरू होने से 2 दिन पहले तुम्हें यहां मौजूद होना चाहिए। अब अगर वो लेट भी होगा तो एक एक दिन लेट हो जाएगा, 2 दिन लेट हो जाएगा, लेकिन वक्त पे ई के शुरू होने से पहले तो पहुंच ही जाएगा। बात समझ रहे हैं ना जी? इसको कहते हैं रिसोर्स बफर। और इसको अगर मैंने शुरू करना हो तो मैं इसको एक डॉटेड लाइन के थ्रू, इधर ड्रा नहीं हो रहा, क्या चक्कर है ये? अच्छा भाई, इधर ड्रा हो नहीं रहा, आई डोंट नो क्या वजह है। ये एक डॉटेड लाइन में बनाऊंगा ऐसे, और इसका बफर मैं यहां पे रख लूंगा इस जगह पर। इसको कहेंगे रिसोर्स बफर। और इसमें फर्ज करें 10 दिन थे, उसके बाद मैंने उसके 2 दिन उसके ले लिए, तो 2 दिन का मैं रिसोर्स बफर रख लूंगा। एंड देयर कुड बी मोर देन वन रिसोर्स बफर्स। ये कहानी है जी क्रिटिकल चेन की। सर ये फ्लोटिंग बफर है? नहीं नहीं, ये रिसोर्स बफर है। इसको डॉटेड लाइन से लगा दिखाया, मैं ऐसे में डॉटेड लाइन बनाई नहीं यहाँ पे, ये इस तरह करके होगा, क्योंकि ये डिपेंडेंसी फिजिकल नहीं है, लेकिन ये रिसोर्स यहां से निकल के इसने इधर जाना है, और इसके साथ मैंने यहां रिसोर्स बफर बीच में बिल्ड करना है कि ये कहीं लेट ना हो जाए एक्टिविटी ई पे पहुंचते पहुंचते। ठीक हो गया जी? ओके। अच्छा, ये जो वो हुई बात जो मैं आपसे अभी कर रहा था, रिसोर्स स्मूथिंग की और रिसोर्स लेवलिंग की। ये जनाब रिसोर्स लेवलिंग ये है, अगर दो रिसोर्सेज में कंफ्लिक्ट है, ए और बी में, वो बंदा, ये सू इज रिक्वायर्ड इन ए आल्सो एंड बी आल्सो एंड दे आर बोथ पैरेलल एक्टिविटीज, देन सू कैन ओनली गो टू बी आफ्टर ए हैज फिनिश्ड। सो हम इसके दरमियान में गैप क्रिएट कर देते हैं, ए के खत्म होने के बाद बी को शुरू करते हैं। तो एक आर्टिफिशियल लाइन कह लीजिए, एक डॉटेड लाइन में रिसोर्स की यहां से यहां लगा देता हूं और अपने क्रिटिकल पाथ को उसके हिसाब से अमेंड कर लेता हूं। तो इससे क्या फायदा होगा कि एक नई डिपेंडेंसी बन गई यहां से लेके यहां तक। अब बी शुरू तब तक नहीं हो सकता जब तक ए खत्म ना हो, क्योंकि सू ने इधर से उधर आना है। इसको कहते हैं जी रिसोर्स लेवलिंग। और रिसोर्स स्मूथिंग क्या है? वो जो मैं बार्स बना रहा था ना, वर्टिकल बार्स बनाई थी, और वो हमने गैन चार्ट के नीचे उसको लेवल, उसको हमने एक लाइन लगाई थी 6 के ऊपर और उसके हिसाब से एडजस्ट किया था, उसको कहते हैं रिसोर्स स्मूथिंग। स्मूदन आउट किए जा रहे हैं रिसोर्सेज। लोग अमूमन उसे रिसोर्स लेवलिंग भी कह देते होते हैं, लेकिन वो गलत है। रिसोर्स लेवलिंग की डेफिनेशन वो है जो मैंने आपको अभी बताई, और ये रिसोर्स स्मूथिंग है। फिर मॉडलिंग टेक्निक्स हैं, हम सिमुलेट करके देखते हैं, व्हाट इफ सिनेरियोस चलाते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, अगर वैसा हो गया तो क्या करेंगे। तो उसकी जितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उनको भी महफूज करके हम रख लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारा प्लान बी ये होगा, अगर वैसा हो गया तो प्लान सी ये होगा। तो इस तरीके के साथ हम ये सिनेरियोज करते हैं, मॉडलिंग करते हैं। अभी एग्जीक्यूशन में जाने से पहले अपने स्केड्यूल के ऊपर मॉडलिंग करते हैं। अगर जनाब ये तो पूरे डायग्राम आप देखें, एमएस प्रोजेक्ट में या किसी सॉफ्टवेयर में अगर इसे इस्तेमाल किया तो कितना आसान है। आप सिर्फ एक्टिविटी को एक को देखें, लेट करके देखें क्या इफेक्ट होता है बाकियों पे। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा, एडजस्ट कैसे करूंगा, मेरे रिसोर्सेज का क्या हाल होगा, तो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन मैनुअली करना ये जरा मुश्किल काम होता है, इसलिए ये सिमुलेशन वगैरह के लिए या तो सॉफ्टवेयर होते हैं, या ऐसा है कि एमएस प्रोजेक्ट या प्राइमरीरा भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं रिस्क मैनेजमेंट के जो उसके अंदर प्लग इन हो जाते हैं,
और उसके थ्रू आप कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आप जानना चाहें तो एक सॉफ्टवेयर बड़ा मजे का है, उसका नाम है रिस्की प्रोजेक्ट, RISKY, रिस्की प्रोजेक्ट। रिस्की प्रोजेक्ट फ्री डाउनलोड हो जाता है, वो सर्च कर लीजिएगा नेट के ऊपर, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वो प्लगइन भी हो जाता है MS प्रोजेक्ट के साथ, और अगर ना भी करना चाहें तो वो बजाते खुद ही एक पूरा सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर स्केजुलिंग भी हो सकती है, गैंट चार्ट भी बन सकता है, सब कुछ हो सकता है उसके अंदर। तो उसके अंदर आप बाकायदा रिस्क की सिमुलेशंस करके देख सकते हैं कि ये जो स्केड्यूल मेरा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, इस डाटे में क्या क्या हो सकता है, व्हाट वर्स्ट कैन हैपन विद इट। तो वो आपको बताता है कि इस तरह होने के चांसेस, इतना लेट होने के चांसेस हैं इस प्रोजेक्ट में, या इतना जल्दी होने के चांसेस हैं। तो वो आपको बाकायदा उसकी सिमुलेशन करके बताता है, और उससे आप बेटर डिसीजन मेकिंग करने की पोजीशन में आ जाते हैं। बाकी आप लीड्स एंड लैग से वाकिफ हैं। स्केड्यूल कंप्रेशन के तरीके दो, क्रैशिंग और फास्ट ट्रैकिंग। क्रैशिंग का मतलब क्या हुआ? क्रैशिंग का मतलब है कि हम रिसोर्सेज बढ़ा देते हैं, पैसा ज्यादा लगा देते हैं, एंड बाय हुक और बाय क्रुक उस चीज को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। स्केड्यूल कंप्रेशन टेक्निक इन विच कॉस्ट एंड स्केड्यूल ट्रेड ऑफ्स आर, मतलब कोशिश तो हमारी ये होती है कम से कम कॉस्ट में, लेकिन कॉस्ट इसमें दबा के खर्च हो जाती है। क्रैशिंग डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस अ वायबल अल्टरनेटिव एंड कैन रिजल्ट इन इंक्रीज कॉस्ट। ये बात जो मैंने आपसे की। फास्ट ट्रैकिंग में हम एक्टिविटीज के दरमियान पैरेललिज्म बढ़ाते हैं, जिससे कॉस्ट पे डायरेक्टली या तो कोई फर्क नहीं पड़ता या मिनिमल फर्क पड़ता है, लेकिन रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये जो स्टार्ट, मैं एक फिनिश जो स्टार्ट एक चीज है उसको मैं स्टार्ट टू स्टार्ट कर दूं, तो फर्क दोनों की एक्टिविटीज के एस्टीमेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा ना कि दोनों इकट्ठी स्टार्ट हो गई हैं। तो लेकिन अगर इकट्ठे स्टार्ट करने से कोई रिस्क रेज होता है, तो वो रिस्क मुझे अगर प्रॉब्लम कर दे, वो एक चीज है कि मेरा कंट्रोल लूज हो जाएगा। फास्ट ट्रैकिंग करने से मेरा क्या कहते हैं, कंट्रोल लूज हो जाएगा, रिस्क बढ़ जाएगा और मॉनिटरिंग करनी मुश्किल हो जाएगी। तो फास्ट ट्रैकिंग की जाती है, पहली ऑप्शन यही होती है। अगर स्केड्यूल कंप्रेशन करनी हो तो पहले फास्ट ट्रैकिंग की जाती है, और इन केस ऑफ इमरजेंसी हम क्रैशिंग करते हैं। फिर और भी कुछ स्केड्यूलिंग के टूल्स वगैरह हैं तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दैट्स इट जी। ये है जी स्केड्यूल का डेवलप करने का। यहाँ जब ये कंप्लीट हो जाता है, स्केड्यूल डेवलप हो जाता है, तो इसकी ये जितने भी हमने सिनेरियोज बनाए हैं और मॉडलिंग की, सारा कुछ इन सारों को सेव किया जाता है। सारी पॉसिबिलिटीज, स्केड्यूल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, सबको सेव किया जाता है, और उनमें से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम उसको फ्रीज करते हैं, बॉस से उसको अप्रूव करवाते हैं और उसको बेसलाइन कर लेते हैं। अब उस बेसलाइन को हमने एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम कंट्रोल में पहुंचते हैं तो कंट्रोल में हमने क्या करना है। कंट्रोल में मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होगा, लाजमी बात है। यहां तो जो होना था वो हो चुका है ना, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान सामने रखूंगा ताकि मैं ये चेक करूं कि इसके मुताबिक काम हुआ है कि नहीं। स्केड्यूल जो बेसलाइन हुआ था वो मेरे सामने होगा, जो काम एक्चुअली एग्जीक्यूशन में हुआ है उसमें जो डाटा क्रिएट हुआ है, वर्क परफॉर्मेंस डाटा, वो मेरे सामने होगा, और मैं इस डाटे को स्केड्यूल के साथ और प्लान के साथ कंपेयर करके देखूंगा कि होना क्या था, हुआ क्या है। एक एक्टिविटी लिखा हुआ है 6 तारीख को खत्म होनी थी, मेरे पास जो डाटा आ रहा है वगैरह 8 तारीख को खत्म हुई है। इसका मतलब है जिस तारीख को होनी थी और जिस तारीख को हुई है उसके दरमियान गैप कितना है। इसको कहते हैं स्केड्यूल वेरिएंस। स्केड्यूल में कितना फर्क आ गया है, इस एक्टिविटी के स्केड्यूल में कितना फर्क आ गया, कितनी डिले हो गई, या ऐसा भी तो हो सकता है जल्दी हो जाए। तो अगर जल्दी हो जाए तो उसे कहते हैं पॉजिटिव वेरिएंस, अगर लेट हो तो उसे कहते हैं नेगेटिव वेरिएंस। तो उस वेरिएंस से हम कुछ हिसाब किताब लगाते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, और फिर ये भी देखते हैं कि भाई इतना लेट तो हम अभी तक हो गए हैं, अगर यही ट्रेंड रहा और हम ऐसे ऐसे ही लेट होते रहे तो अगली प्रोग्रेस रिपोर्ट तक तो हम इतना डिले हो चुके होंगे, उससे अगली प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम इतना डिले हो चुके होंगे। ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूं। एक ट्रेंड जो अब तक का बना हुआ है उसको मैं प्रोजेक्ट करके देख रहा हूं अगले महीने पे, उससे अगले महीने पे, और अल्टीमेटली
मैं जो पूरे प्रोजेक्ट पे जब उसे फोरकास्ट करता हूं उसको कहते हैं फोरकास्टिंग, कि अब मेरी फोरकास्टेड डेट क्या है। अब मेरा स्केड्यूल पहले तो था कि 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, अब मेरी नई डेट क्या निकलती है, वो है जी अब 13 मार्च, ढाई महीने मेरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा अगर मैंने कोई एहतियाती तदाबीर ना की तो। इसका मतलब है अगर तो डैमेज कंसिडरेबल है तो मुझे एक्शन लेना है और फौरन लेना है, और अगर लेना है तो फिर मुझे उसको चेंज रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जनाब इस डेटे के साथ हम रिव्यू करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये हम जैसे आपको बताया था वैल्यू चेंज करके आप वहां कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन वाली टेक्निक जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं, मॉडलिंग की टेक्निक्स भी, वो सब कुछ कंप्रेशन की टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हैं, लीड लैग भी बढ़ा घटा सकते हैं, और कुछ शेड्यूलिंग टूल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वर्क परफॉर्मेंस डेटा था इसका एनालिसिस करने के बाद हमारे पास बन गया वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इज दी, यानी कि जिसे कहना चाहिए कि एनालाइज्ड डेटा है। ये डेटा जब एनालाइज हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, तो इंफॉर्मेशन बन जाता है। वर्क परफॉर्मेंस डेटा रिव्यू होने के बाद इंफॉर्मेशन बन गया। ये इंफॉर्मेशन स्केड्यूल कंट्रोल से निकली और भी जगहों से जो जितने कंट्रोल काम कर रहे होते हैं, कॉस्ट का कंट्रोल है, रिस्क का है, इसका उसका, सारे कंट्रोल वर्क परफॉर्मेंस डेटा को अपने अपने हिसाब से चेक करते हैं और अपनी अपनी इंफॉर्मेशन बनाते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन के पास भेज देते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में। प्रोसेस का नाम था मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। वो फिर इन सबको कंपाइल करके इनसे बनाती है वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इसके अलावा जो आपने फोरकास्ट बनाया, जो मैंने अभी आपको बताया ट्रेंड एनालिसिस फोरकास्ट, ये फोरकास्ट भी हम बनाते हैं और बना के ये भी उसी को भेज देते हैं मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क को, ताकि वो फर्दर एनालिसिस कर सके इंटीग्रेशन के लेवल पर। अगर आप ये समझते हैं कि जो डैमेज है वो कंसिडरेबल है और इससे स्कोप या टाइम या कॉस्ट में से कोई चीज इंपैक्ट हो रही है, तो आप यहां पर चेंज रिक्वेस्ट मूव कर सकते हैं, और जो चेंज रिक्वेस्ट आप मूव करेंगे वो यहां से निकल के कहां जाएगी, इंटीग्रेटेड चेंज, और वो फिर इसको अप्रूव या रिजेक्ट करने का मजाज होगा। इसके बाद जनाब अपडेट्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर चेंज रिक्वेस्ट अभी तो गई है, अप्रूव ही नहीं हुई, तो ये चीजें कैसे अमेंड हो रही हैं। तो उसका मैंने असूल ये बताया था कि अगर तो चेंज रिक्वेस्ट बनती है तो वो तो अप्रूवल के बगैर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं कर सकती। अगर चेंज रिक्वेस्ट है, और चेंज रिक्वेस्ट कब होगी, जब स्कोप टाइम या कॉस्ट इंपैक्ट हो रहा होगा, तो मैंने चेंज रिक्वेस्ट बनानी है। चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव होकर आएगी तो प्रोजेक्ट प्लान या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट होंगे और एग्जीक्यूशन को बता दिया जाएगा कि भाई अब ये चेंज हो गया, इसके मुताबिक काम करो। लेकिन व्हाट इफ के चेंज रिक्वेस्ट ना बनती हो, लेकिन ऐसी कोई तब्दीली हो जो ना तो स्कोप पे असरअंदाज हो रही है, ना टाइम पे, ना कॉस्ट पे, लेकिन कुछ रद्दो बदल करना है, कुछ करेक्टिव मेजर्स आपने बताने हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं, तो उनके मुताबिक अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान या प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को अमेंड कर भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ये श्योर किया है कि स्कोप टाइम और कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप वो अमेंडमेंट तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। ये दो किस्म की चीजें हैं, इसमें करेक्टिव एक्शंस हैं और इसमें प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। जी ओके, तो ये जनाब ये चीजें प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शन की सूरत में हम इधर अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि हमने जो ये प्रोसेस कंट्रोल शेड्यूल का किया है, इससे हमने कोई लेस किया है या कोई चीज आप हिस्टोरिकली छोड़ना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट को भी अपडेट आप कर सकते हैं। ये जनाब इसका सारा तरीकाकार आप ये देख सकते हैं। खास तौर पे वर्क परफॉर्मेंस डाटा आया और यहां से कहां गया, ये देख लीजिए, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क हो गया वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, और स्केड्यूल फोरकास्ट जो बनी थी वो भी इसी को गई। चेंज रिक्वेस्ट जो यहां से बनी थी वो चली गई परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट भी उधर चला गया। और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में अगर कोई अपडेट होती है तो वो तो आपको पता है, एक अलग पड़े होते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, वो उसमें जाके अपडेट हो जाएगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट अपडेट होता है तो वो पीछे जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपडेट कर देगा। और हमें ये कंट्रोल शेड्यूल करने के लिए भी प्रोसेस एसेट चाहिए होते हैं।
हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी चाहिए होता है, वर्क परफॉर्मेंस डाटा एग्जीक्यूशन से चाहिए होता है, और इसके अलावा डेवलप स्केड्यूल जो हमने किया था प्लानिंग के अंदर, वहां से हमें स्केड्यूल कैलेंडर और स्केड्यूल डाटा भी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ वो सब इनपुट और आउटपुट जो पिछली स्लाइड में दिखाए गए हैं वो वाजे हैं। ये जनाब इनके इनपुट्स, ये आपके परफॉर्मेंस रिव्यूज, जहां हम ट्रेंड एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया ट्रेंड क्या बनता है, क्रिटिकल पाथ पढ़ा हुआ है आपने, उस लाजमी बात है कि जब कोई डाटा चेंज होगा तो क्रिटिकल पाथ भी चेंज होगा, तो क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल चेन, सब कुछ इस्तेमाल होगा। यहाँ पर क्रिटिकल चेन भी इस्तेमाल हो रहा है। अर्नड वैल्यू मेथड है, ये हम पढ़ेंगे। आल्दो इसका इफेक्ट कॉस्ट पे भी है, स्केड्यूल पे भी है, लेकिन हम इसे कॉस्ट वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे और उसमें हम स्केड्यूल का भी जिक्र करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ी है आपने, मॉडलिंग टेक्निक, सिमुलेशंस वगैरह, मॉडलिंग वगैरह, लीड्स एंड लैग्स, स्केड्यूल कंप्रेशन, और इसके अलावा कोई और भी अगर स्केड्यूलिंग टूल है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटपुट में हमारे पास वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन और फोरकास्ट निकल रही है जो कि जा रही है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क को, चेंज रिक्वेस्ट निकल रही है जो इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को जा रही है, और ये दोनों चीजें अपडेट हो रही है। ये जी, दिस कंक्लूड्स आवर स्केड्यूलिंग चैप्टर विच टुक ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स तकरीबन हो गए, एक मिस क्लास बीच में निकाल के, तो तकरीबन 3 से 4 लेक्चर हमने इसके ऊपर सर्व कर दिए और काफी टाइम लग गया। तो कॉस्ट का भी थोड़ा लंबा चैप्टर है, शायद वो भी 2 लेक्चर तो ले लेगा। देख लेते हैं, कल है ना जी क्लास हमारी, कल इंशाल्लाह इसको करते हैं। अच्छा जी, क्या सूरत हाल है, कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, फास्ट है, स्लो है, क्या कहते हैं, क्योंकि आज तो डिस्कनेक्शन ही होते रहे। समझ आ रही है। ओके, क्यों जी, सब ठीक है, ओके है, या मेरा मतलब है जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और दोबारा आके मिलते हैं तो प्रॉब्लम तो होता होगा ना आपको कि ये पता नहीं क्या मिस हो गया, क्या हो गया, और पिछला लेक्चर भी रिकॉर्ड नहीं हो सका। सर आज तो आपने काफी रिपीट कर 2 दिया। मिनट लगते हैं जरा। मैं ऐसा करूंगा, मैंने इसीलिए आज थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया था ताकि जो लेक्चर नहीं रिकॉर्ड हुआ उसके सेलिएंट्स कवर हो जाएं, तो वो सब मैंने आज कवर किए हैं। तो आज के लेक्चर को आप आगे से काउंट कीजिएगा, और अगर कोई मुश्किल हो, कोई मसला समझ ना आ रहा हो, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। जो लोग इस्लामाबाद में हैं वो तो भले मेरे पास आ जाएं, मैं इधर कुछ देर बैठ के आपको समझा दूंगा वो बात, और नहीं तो फोन पे भी समझ सकते हैं, या फिर हम मुमकिन है अगर नेट के ऊपर बात कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मैं भी रिकॉर्डिंग इसकी अपलोड कर रहा हूँ जो आज की। सर ये आज ही हो जाएगी सर अपलोड रिकॉर्डिंग सर इसकी, आज वाले लेक्चर की सर? टाइम लगता है इसको प्रोसेस होने में, 2-3 घंटे बाद ये कहीं फाइल अवेलेबल होगी, उसके बाद फिर जो ही मिलती है तो मैं चढ़ा दूंगा। ठीक हो गया सर। और जी, एनी अदर कमेंट्स? नो सर, एक्सीलेंट आपके लेक्चर्स हैं, बहुत शुक्रिया आपका सर। तो शुड वी कॉल इट अ डे नाउ? फाइन सर, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।